Last chapter of IAD, India, China, Pakistan. Comparative development. Comparative development experiences of India and its neighbors. So a comparison between India, China and Pakistan. अब इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो पूरी बुक ने बता ही दिया. तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के बारे में बताया जाएगा थोड़ा सा, और उसके बेसिस पे कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पे कंपैरिजन होगा. तो इंडिया के बारे में कुछ नया नहीं बताएंगे, कह रहे वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं. तो किस पे फोकस करेगा? चाइना और पाकिस्तान के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पे. फिर कंपैरिजन between India, China and Pakistan. A very very important chapter. 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस पे आना ही आना है. 100% मतलब मिनिमम. जैसे चैप्टर 1 में से कितना आएगा, चैप्टर वाइज फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि चैप्टर 1 2 3 एक यूनिट है. फिर बाकी आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, एक यूनिट है. एक यूनिट है. उनमें से कोई फिक्स चैप्टर में से नहीं बता सकते कितना आएगा कितना नहीं आएगा. ये एक ही चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर, एक ही यूनिट है. तो ये थर्ड यूनिट ऑफ आईईडी. अ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स. कंपैरिजन किस बेसिस पे? डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस. In the preceding chapters, we have studied in detail all the aspects of the Indian economy, its problems, policies, and development. We know the economies of the world have been classified into developed and developing economies. In the post-Cold War world, post-Cold War world क्या है? The Cold War, 1947 to 1991, the period between 1947 to 91 was a sustained state of political and military tension between the powers of the Western world, led by USA and its NATO allies, and the communist world, led by the Soviet Union, its satellite states and allies. तो 1991 में क्या हुआ था सर? सोवियत यूनियन खत्म हो गई थी. सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई थी. रशिया अलग, बाकी अपने अलग. तो 1947 से 1991 तक एक कोल्ड वॉर पीरियड था. इन द पोस्ट Cold War world, nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. Be careful. They have been primarily trying to adopt various means, but the purpose is to strengthen their own domestic economies. So if I am becoming a part of a union or a group, that is not for your benefit. That is primarily for strengthening my own domestic economy. To this effect, they are also forming various regional and global economic groupings such as SAARC, European Union, Asian, G8, Group of 8, Group of 7, G20, BRICS, etc. Out of these, India is a member country of SAARC, G20, and BRICS, while China is a member of G20 and BRICS. Pakistan is a member of SAARC only. Important है ये पता होना कि कुछ नाम क्या है, ये ग्रुप्स हैं, यूनियंस हैं. Purpose, why do we join these groups or unions? To strengthen our own domestic economy, to enter into a treaty or a pact with other countries primarily for the benefit of my domestic economy. But it is always a two-way affair. मैं आपके किसी बेनिफिट आऊंगा तो ही आप मुझे कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. तो इंडिया किस किस का मेंबर है? SAARC, G20 and BRICS. China, G20 and BRICS. Pakistan, only SAARC. पता होना चाहिए. Moreover, various nations are also trying to understand, important point है, various nations are also trying to understand the developmental processes pursued by their neighboring countries, as it allows them to realize their own strengths and weaknesses
in comparison to their neighbors. Why do we want to study the economy of Pakistan or China for that matter? So that not just Pakistan or China, we try to study all the different economies. हमारे कोर्स में सिर्फ चाइना और पाकिस्तान है, क्योंकि चैप्टर क्या है कि we are comparing the developmental experience of India with its neighbors. तो neighbors में चाइना पाकिस्तान. But we study the developmental experience of all the countries to learn from them. आप पेपर देना चाहते हो तो जो टॉपर है आप बोलोगे उसका पेपर देखना चाहोगे, उससे बात करना चाहोगे, उसका प्रेपरेशन प्लान जानना चाहोगे कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, कि वो बेटर परफॉर्म कर रहा है. तो वो उनकी परफॉर्मेंस ही तो है. किसी भी इकोनॉमी का आप उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं, वो कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या उनके एक्सपोर्ट्स हैं, क्या इंपोर्ट्स हैं, सारा डेटा अवेलेबल होता है. Various nations are trying to understand the developmental processes pursued by their neighboring countries, as it allows them to realize their own strengths and weaknesses in comparison to their neighbors. In the process of globalization, the developing countries are facing competition not only from the developed nations but also from other developing nations. With globalization, the entire world has become one economy. Removal of trade barriers, restrictions कम हो गई, one world one economy. तो उससे क्या होता है, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी खरीद सकते हो. तो अब क्या होगा, सेलर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. अगर इंपोर्ट्स अलाउड नहीं है, अगर एक कंट्री में इंपोर्ट्स अलाउड नहीं है, तो उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स तो खुश कि भैया हमारा सामान नहीं लेना पड़ेगा इन्हें, इंपोर्ट तो ये कर नहीं सकते. लेकिन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, हट गई ये रिस्ट्रिक्शंस, अब आप इंपोर्ट कर सकते हो. तो कंपटीशन कहीं बड़े स्केल पे हुआ, नॉट जस्ट विद द डेवलपिंग नेशन, नॉट जस्ट विद द डेवलप्ड नेशंस, but with the developing nations as well. So an understanding of other economies in our neighborhood is required so that we can learn from their positive contributions and we can understand our strengths as well. किस चीज में हम बेटर हैं ताकि हम उस पर ज्यादा फोकस करें, और क्या हमारी वीकनेस है वो भी हमें पता होना चाहिए ताकि उस पर भी हम वर्क करें. स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है क्योंकि वो आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा. वीकनेस को भी मॉनिटर करना जरूरी है ताकि वो आपको मरने से बचाएगा. ठीक है ना, क्योंकि आपका जो कंपेटिटर है वो आपकी वीकनेस को अटैक करना चाहेगा, आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी स्ट्रेंथ क्रिएट करके देगी. पॉइंट इज सिर्फ अपने पे फोकस नहीं होना चाहिए, नेबरिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज पे भी फोकस होना चाहिए टू लर्न फ्रॉम देम. इन दिस चैप्टर वी विल कंपेयर, हमारा चैप्टर का कंटेंट बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है. We will compare the trends in various economic and human development indicators of India, the largest democracy of the world and the largest population with a secular and liberal constitution for over half a century. A secular and liberal constitution, largest population to ab hui hai, but we have been a secular and liberal constitution for over half since 1947. With its two neighboring countries, with its two principal neighbors, China and Pakistan. China, which has started moving towards a more liberal restructuring of its command economy since the late 1970s. It is the second largest economy in the world. Second largest economy. Largest कौन सी है? India. Yes or no? Economy, largest economy, USA. Largest economy, USA. China is the second largest economy. Sir, ऊपर तो ना largest democracy. Largest democracy of the world. India is not the largest economy of the world. China is the second largest economy. तो largest economy कौन सी है? US. इंडिया कौन से नंबर पे है? 5th. इंडिया किस पे है? 5th पे. तो चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड,
today and showcases an interesting mixture of an economy with the features of a free economy while still following the socialist model under the control of a communist state structure. Recently, there has been an economic slowdown in China due to President Xi Jinping's policies like zero COVID policy and collapse of real estate and banking sector, amongst many other factors in play simultaneously. Zero COVID policy कह रहे जहाँ पे जीरो केसेस होंगे ना सिर्फ वहीं पे काम होगा. जहाँ पे एक भी केस आ गया बंद प्रोडक्शन, वो एरिया बंद सील कर दो, तो फिर काम ही नहीं हो पाया. बहुत टाइम तक लॉकडाउन कंटिन्यू होता रहा एंड दे आर फेसिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन. पाकिस्तान, तो वी आर कंपेयरिंग इंडिया with China and Pakistan. China, they have an authoritarian militarist political power structure. Economy is in shambles due to rampant corruption and systematic misuse of states' funds for the purpose like terrorism, instead of using it for state welfare and crumbling debt that they have acquired from countries like US, China, Saudi Arabia, and others. All the three countries have more than 6 decades of development experience behind them. वही हमें compare करना है अभी. We will also appraise the strategies adopted by these countries to reach their present state of development. तो पहले हमें थोड़ा सा familiar कराएंगे कि चाइना की क्या strategies रही, पाकिस्तान की क्या strategies रही, फिर होगा comparison, धीरे धीरे हौले हौले.